welcome back to TIO TV and this is Kashish. So today's video is actually a fail to success video and ये video है my 10th board exams kind of routine and how I studied for my boards. So as many of you might probably know, I was in 10th last year. That means I'm in 11th right now and I just passed my board exams. अगर आपको पता ही होगा, you know, watching from my family vlog channel, you probably know now I'm in 11th. So many of you guys actually commented on like almost all of my videos कि you guys wanted to see how I studied for my board exams or how I passed. तो मैं आपको अपनी पूरा पढ़ाई का सॉर्ट ऑफ रिव्यू देना चाहूँगी, कैसे मैं पढ़ी थी या कौन सी जो कुछ टिप्स थी दैट एक्चुअली हेल्प मी और सम रेफरेंस बुक्स दैट एक्चुअली वर अमेजिंग फॉर मी दैट हेल्प मी टू पास माई बोर्ड एग्जाम्स very nicely. And if you're also in 10th grade, this video might be really helpful for you even if you're starting from zero or you're starting from scratch, because मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं about 9th class की like starting से थोड़ी middle में I shifted from US to India, so I basically started from scratch. I didn't know anything about I did know things about Indian studies because मैं पहले जब रहती थी तब मैं study करती थी, but I was in like 4th class when I left. So I missed a lot of very important years of studying in middle और मैं एकदम से आके you know 9th class में यूएस से इंडिया आ गई. एंड यूएस का करिकुलम बहुत ही डिफरेंट होता है इंडिया के करिकुलम से. इंडिया इज आई फील लाइक वे हार्डर. आई डोंट नो अबाउट योर एक्सपीरियंस और इफ समवन हैज़ बिन देयर, बट मेरे लिए तो स्पेशली हार्डर था बिकॉज वो पूरा करिकुलम पूरा सिलेबस डिफरेंट था, कोई भी बेसिक्स मैच नहीं कर रहे थे. So I had to start from zero. And starting my 9th class I struggled a lot. Like you guys have no idea. I actually probably I was worst at maths. I failed my maths exam and I'm not even lying, like I literally failed my maths exam, which was the first exam I came, like since I came from US, it was my first exam and I failed it. I was not good at all and I was so scared because I mean अगले साल मेरा boards था, it was 10th next year and I was like how am I gonna cope up. So मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के अपने से खुद से पढ़ा. मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया एक which was just close to my house, not any like particular coaching, और मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया जो मेरे लिए हेल्पफुल था, very helpful to get me through 9th class. And इतना burden तो नहीं था 9th में, except मेरे पे था because I just recently shifted और मुझे बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी पड़ी. मैं बहुत सारी चीज़ों में I was lacking behind everyone else and it was just bad. It was bad as whole stressful because 9th एक होता ही है big step from like 8th, तो वैसे भी था. और फिर comes 10th class. अब मैंने स्टार्टिंग से सोच के रखा था कि as 10th begins I want to like start preparing from the start because अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हो then there's higher chances you're gonna do way better in your boards. आप अगर ये सोचोगे कि एंड तक आप you know like एंड तक भी छोड़ो कि मैं लास्ट के कुछ महीनों में बहुत अच्छा पढ़ लूँगा या अच्छा पढ़ लूँगी तो मैं बहुत ही अच्छा कर लूँगी बोर्ड्स में. बट मैं बताऊँ सबसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, these are all other things just based on my experiences and I'm not a professional you know giving you advice to do that or this is just based on my experience and from my experience I could tell that क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी शुरू की थी because I was like नहीं मुझे पता है चाहे मैं थोड़ा थोड़ा ही करूँ but I wanted to मैं स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ाई करना चाह रही थी because फिर धीरे धीरे एंड तक मेरे पास कम चीज़ें बचेंगी, एकदम से पूरा वो नहीं पड़ेगा बर्डन मेरे यू नो सर पे. तो आप लोग ये एडवाइस तो बहुत ही सुनते हो कि आप स्टार्टिंग से पढ़ के चलो, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट यू गाइज, यू नीड टू वर्क ऑन दिस बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके पास बहुत सारे मंथ्स हैं, वो मंथ्स ऐसे ही निकल जाएंगे और ट्रस्ट में आपको लगेगा भी नहीं कि अब देखो बोर्ड का एग्जाम आ गया. क्योंकि मुझे दिसंबर के बाद आई वाज लाइक ओ माय गॉड बस 2 महीने बचे हैं. तो मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने सबसे पहले 10th में आते ही आई वाज लाइक ओके आई नीड टू get a schedule. So the first thing that is very important for all of you guys who are probably preparing for boards either 10th or 12th is that you need a schedule. Like that's a basic thing that you need. मुझे पहले मैंने 9th क्लास में कोई schedule follow नहीं किया था but still I did okay. But मुझे पता था 10th में इतना सारा syllabus है, इतनी सारी चीज़ें हैं that I need a schedule. और पहले मैंने कभी schedule नहीं बनाया by the way. मैंने अपने डैड की हेल्प ली because he was like Kashish, you have to make a schedule. This is not gonna work if you try to pile up everything and do
whatever you want on any time. उन्होंने मेरे साथ बैठ के एक्सेल शीट पे पूरा मेरा सिलेबस लाइक लेआउट किया था कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें कब तक ख़त्म करनी है. और मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल आगे चल रही थी सिलेबस की. मतलब मेरे स्कूल में जो टेस्ट में आ रहा है मैं उससे कहीं ज़्यादा चैप्टर्स आ गए थी. मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन पहले ही करके रखी थी. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने अपना स्केड्यूल एक्चुअली ऐसे ही बनाया था कि मेरे स्कूल के एग्जाम्स की डेट्स के साथ ही चले. बेसिकली अगर मेरा मिड टर्म है तो मिड टर्म तक का जो भी सिलेबस मेरे स्कूल में आ रहा है मेरा उतना 100% कंप्लीट होना चाहिए. और मैं उसी के लिए खुश थी कि मेरा एटलीस्ट इतना तो कंप्लीट है. और मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं किया था उससे ज़्यादा जितना मेरे स्कूल में टेस्ट में आ रहा था. और बेसिकली मैंने इसी हिसाब से स्केड्यूल बनाया 2 या 3 मंथ्स का एक बार में बैठ के. एंड दैट बेसिकली टुक मी अ होल डे लिटरली. तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्केड्यूल बनाए, चाहे कितना भी टाइम लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, बट आप 2-3 महीने का बना के रखिए और उसके हिसाब से आप फॉलो करना शुरू कीजिए. यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो. जो चीज़ नहीं करी थी मैंने उसको रेड में मार्क किया था, जो की थी मैंने उसे ग्रीन में मार्क किया था. बट यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. यू कैन जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट एंड देन आपके स्केड्यूल में लिखा है कि आपने कोई चीज़ किया, आपने उसको भी राइट कर दिया, अब जो कि आपने नहीं किया हो. तो you have to be careful for that. First of all, you need to know that this is going to be hard work and you are going to miss out on few things. Like I last year missed out on quite a few things. Like I didn't miss out that much. और मैं ऐसी भी नहीं थी घर पे बैठ के बस पूरे टाइम पढ़ रही हूँ. But मैं ऐसी भी नहीं थी कि I'm like out every weekend. क्योंकि you probably saw from my family channel like मम्मी डैडी लाइक हमेशा जाते रहते थे बाहर टू द मॉल, टू द रेस्टोरेंट्स. बट आई probably like didn't go to at least half of them. More than half of them I didn't go last year. I did visit a lot of places and it's actually important that you do other things other than studying. बिकॉज आई डोंट नो अगर कोई पर्सन 100% स्टडी करता रहे, बिकॉज मेरा दिमाग तो पक जाएगा अगर मैं इतनी पढ़ाई करूँ. तो सेकेंड पॉइंट है कि यू नीड टू टेक ब्रेक्स एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स. इट्स लिटरली सो इंपॉर्टेंट. क्योंकि बहुत बार तो ऐसा भी होता था आई वॉज स्टडिंग फॉर लाइक 2-3 hours बट आई वुड स्टिल गेट बोर्ड एंड आई वुड जस्ट लाइक प्रोक्रेस्टिनेट एंड देन फिर कुछ भी काम नहीं रह जाता था. तो इस वजह से मैं बेस्ट टाइम ब्रेक लेने का अपने स्केड्यूल में ही फिट करती थी. मैं आवर्स के हिसाब से लगती थी. आई नो लाइक फ्रॉम 11 to 12 I'm going to study maths, so I'm going to only study maths. I'm not going to pick up my phone. I'm not going to do anything else other than that. तो अगर आप टाइमली ब्रेक्स लोगे, चाहे आप 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक भी ले लो, देन इट्स बेटर बिकॉज देन यू डोंट ड्रिफ्ट ऑफ ऑन टू यूट्यूब सर्चिंग एनीथिंग यू वांट. एंड आई नो दैट हैपन्स टू एवरीबडी लिटरली स्टडिंग. और ये बहुत होता है लाइक यू ड्रिफ्ट ऑफ टू डूइंग थिंग्स एंड यू लाइक ओ माई गॉड आई लॉस्ट ऑल माई टाइम. बट इफ़ यू डू टाइमली ब्रेक्स देन इट्स नॉट गोइंग टू रियली हैपन. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ट्यूशन जा रही थी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इफ़ it's not really important. I guess it depends on you, but I've seen most of the kids like out of my class about only leaving one person, which was my best friend, did not take any tuitions, but later she took tuitions too. But I would advise you to join a good tuition. Like आपके घर के पास जो भी ट्यूशन हो या जो भी आपको अच्छा लगता है, मे बी आपको घर पे होम ट्यूटर पढ़ाने आए, anything you should try many things. I actually tried home tutor and then I switched to an actual tuition classes that were like somewhere far. And home tutor was not as beneficial for me when I tried it क्योंकि I think मेरे टीचर ही मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी पढ़ाते थे. I don't know what the problem was, but I couldn't keep up with the pace and I didn't like the teacher. So मैंने normal tuitions join कर लिए. And it's important that you go regularly and you keep both works like tuition और घर का काम. if you're doing tuition कि आप ट्यूशन और स्कूल का काम दोनों एक साथ करें एंड उसके साथ पेस में चलें. क्योंकि हमारे ट्यूशन में भी टेस्ट होते थे तो काफ़ी मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी. और अगर आपके पास ट्यूशन नहीं है देन दैट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ माई फ्रेंड्स दैट डिडंट इवन टेक ट्यूशन एंड स्टिल डिड गुड इन बोर्ड्स. एंड यू कैन टोटली डू इट योर सेल्फ बट यू हैव टू बी वेरी लाइक स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ कि नहीं मुझे जाके पढ़ना है अब इस टाइम पे एंड आई हैव टू एंड आई कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट इन एनी वे. लाइक आई एम माई ओन ट्यूटर माई सेल्फ एंड आई नीड टू सेल्फ स्टडी or take help from your parents, then remind them and work with them to actually study the subject you want to. The next point I would like to discuss is about self study. So other than like going to tuition and school and studying whatever I got from there, like the learning and the knowledge, I had to definitely study myself, and self study is literally the goal. इज़ द की टू लिटरली सक्सेस. बिकॉज जब तक आप कोई चीज़ खुद से पढ़ोगे नहीं, आप किसी को सुनते रहोगे, तब तक आपको आएगा नहीं. यू हैव टू स्टडी इट योर सेल्फ. एंड मुझे बहुत एक्चुअली आई रियली बिलीव इन सेल्फ स्टडी बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे यू कैन से हिस्ट्री
and science. I really liked self-studying because both of them were like my interesting subjects. And yeah, you're probably like, you like history. I hate history. I mean, not everybody hates history, but I actually loved SST, like not history, I'm just saying SST overall. SST I actually enjoyed it quite a bit. और मैं आपको आगे टिप्स दूंगी कि कैसे आप स्पेशली इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं. और अब नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, आई गेस द बेस ऑफ योर होल स्टडिंग इज द बुक्स यू यूज़. So my number one suggestion and the best book to study for boards is your NCERT. And really I really do believe in studying in NCERT because जो NCERT books हैं वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल है. मतलब हेल्पफुल मतलब वही आपका सिलेबस है. एंड एक्चुअली आप सोचते होगे कि बोर्ड में पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से पता नहीं कुछ और दे देंगे, कहीं और का निकाल के दे देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो अबाउट मैं बोलूँगी 100 में से 95 इवन 90% आपका सब NCERT का ही था. उससे बाहर कुछ था ही नहीं. और जो थोड़ा बहुत बाहर से आता है दैट्स जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज इफ़ यू आर एक्चुअली अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT इन द एग्जामिनेशन पेपर. एंड थोड़े बहुत डिफरेंट यूज़ करने होते हैं आपको बुक्स जस्ट सो यू कैन गेट अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, नॉट जस्ट NCERT, but NCERT is more than enough for some subjects. Like you can say English, I only used NCERT. Later I did get a question bank, but NCERT was my main thing. For history I mainly used NCERT. So I use my NCERT books for everything, for every subject, and I studied them religiously. Like they were my Bible. They were my Bible. They were everything. And मैं बताऊँ आपको even reference book की इतनी ज़रूरत नहीं है. If you just get NCERT, if you can complete that, then you're good to go. You will do amazing on your test. But here are some reference book that I actually used that helped me personally. So first let's start for maths. Okay, so maths के लिए आपने सुना होगा कि RS Agrawal and RD Sharma, both of these books are actually super helpful. For me, I would say RS Agrawal was even better than RD Sharma because RD Sharma में kind of complex questions होते हैं ज़्यादा, because उसमें level 1 level 2 के questions होते हैं. And personally मैंने 10th में RD Sharma बहुत ही कम यूज़ की थी, लाइक वेरी मिनिमल. मैंने यूज़ ही नहीं की थी RD Sharma. मैंने 9th में काफ़ी यूज़ की थी, बट 10th में मैंने RD Sharma नहीं यूज़ की. RS Agrawal मैंने बहुत यूज़ की. मैं ऑलमोस्ट उसके सारे क्वेश्चंस कर चुकी थी, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस. आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर. एंड वो बुक एक्चुअली वेरी हेल्पफुल है. उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको हर डिफ़िकल्टी का मिल जाएगा. हर NCERT के एग्जाम्पल या NCERT क्वेश्चंस भी सॉल्व है. तो दैट्स अमेजिंग फॉर मैथ्स. नाउ नेक्स्ट इज साइंस. विद साइंस आई हैड क्वाइट अ बिट ऑफ कंफ्यूजन इन द स्टार्टिंग विच रेफरेंस बुक टू यूज़. और मैंने लक्ष्मी सिंह खरीद ली होगी, मे बी आपने भी उसका नाम सुना हो, बट लक्ष्मी सिंह जो बुक है वो actually did not help me at all, created more confusion. So I would recommend you not to buy Lakshmi Singh, क्योंकि मे बी आपके लिए अच्छी हो, बट मेरे लिए मैं बता सकती हूँ उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कंटेंट था that you didn't need. Especially like if you wanted to just ace your board exams, you didn't need that content. Maybe for competitive exams you might need, but you don't need it for 10th. So उसके बाद जब मैंने उसे छोड़ दिया, I was just studying my tuition sir's notes, and I was just studying my NCERT. Like I just left my reference book. You like कि science की especially question bank आती है जिसमें सिर्फ questions होते हैं, बहुत सारे questions होते हैं. You can just keep like practicing those questions, and उसमें हर chapter के बहुत ही अच्छे questions होते हैं. And I would highly recommend you to buy a U-like if you really want to practice what you actually studied in your NCERT. Next, let's talk about SST. It's really a lengthy and long subject, especially if you don't find interest. Luckily for me, I did have interest in SST, but I know many of you guys do not prefer SST. मेरे बहुत सारे friends hated SST and were like, Kashish, how do you even study SST? Really. But here some tips that I found were useful for me in SST especially. So सबसे first thing that I did in SST is read the chapters. Sometimes when I was reading chapter I did feel bored too, but I read the chapter through. मैं chapter जब read कर रही थी, I made notes, I underlined, and I made a lot of notes. I literally did. In another copy, I've got another copy and I made notes. मेरा कोई SST का ट्यूशन नहीं था. I just had tuition for math and science, so I did not have any tuition for SST. मैं खुद ही पढ़ाया मैंने SST, और मैंने बस वो किया. और उसके बाद मैंने एक रेफरेंस बुक यूज़ की, which is like my holy grail. Like I love that book. It is the book
that got me through SST, and that is You Like. And You Like की same, it's the SST like question bank, and इसमें सारे chapters के, I mean every chapter from geography, from civics, from economics, from history, it's like every chapter के क्वेश्चन आंसर्स. एंड वो क्वेश्चन आंसर्स इतने भी ज़्यादा नहीं थे, मैंने पूरी बुक खत्म कर दी थी बाय द एंड ऑफ द ईयर, बट उसमें वो बहुत ही हेल्पफुल थी क्योंकि उस बुक में उस एनसीईआरटी के आंसर्स क्वेश्चंस के ही आंसर्स थे. ऑल्सो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, दोज क्वेश्चंस वर लाइक एनसीईआरटी बेस्ड, और वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे. नेक्स्ट कम्स टू इंग्लिश. अब नेक्स्ट इंग्लिश मैंने एक्चुअली because you know I lived in USA, so I had quite an experience with English already. हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से practice करते थे English. I had developed pretty good skills about writing and writing essays, speaking, and तो ये सब मेरी English तो ऐसे वहाँ पे रह के अच्छी हो गई थी. And when I came back to India, I didn't have to like put in so much effort towards English, so I used to still study it. I did not think like इंग्लिश को कौन पढ़ता है, इंग्लिश मत पढ़ो. एंड ये मैं भी सोचती थी, आई वाज लाइक इंग्लिश को पढ़ने की क्या जरूरत, इंग्लिश ही तो है. बट यू नीड टू एक्चुअली रिमेंबर टू कीप स्टडिंग दैट टू एंड नॉट फॉरगेट दैट सब्जेक्ट बिकॉज इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट and it does matter because it gives you a grade in your results, so you have to keep English in touch. और बाकी मैंने बस एनसीईआरटी जो मैम ने किए थे, मैंने एसेज रिवाइज किए थे, राइटिंग स्किल्स की थी, ग्रामर, एवरीथिंग एल्स आई जस्ट practice the way it was, so I cannot really tell you really how I did it. I just understood English so well that I just read the books. Next है हमारा हिंदी. हिंदी is a subject that I did not study for, frankly speaking, 5 years, and I moved in 9th, so I started building up my Hindi skills, and I didn't have a tutor for Hindi either. Like I said, I just had it for maths and science. तो मेरी मम्मी पढ़ाती थी मुझे हिंदी. So my mom is pretty good at Hindi, और उनको I mean she's pretty good, and उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है through Hindi. That way I used to always read the chapters, always read the chapters before every UT, before every exam, and this is one thing I'll tell you I did for all subjects. मैंने बाकी सारे subjects के लिए, सब के लिए मैंने हर UT से, हर exam से पहले, हर mid term से पहले मैंने वो chapters पढ़े थे. No matter by the end I would say मैंने वो chapters literally like 15 से 16 times पढ़ चुके थे उस साल में, and I had read every chapter a lot of times. And reading does help because, especially for me, because I'm a person that can read something and try to remember it that way, so मेरे लिए like reading it something for 15 times really made it permanent in my brain. So that's one like trick I guess you could do to help you remember things, to read it over and over and over again, no matter how boring it gets. Just try to find something interesting in it and read. और हिंदी के लिए भी मेरा ऐसी था, one reference book I used for हिंदी. तो हिंदी के लिए स्पेशली जो मैंने रेफरेंस बुक यूज़ की थी वो थी फुल मार्क्स, and that book really helped me to get my NCERT solutions and some extra solutions, so that was good. So that includes all my subjects and a detailed information on how I studied them and the tips I used to study my subjects. So basically this was my layout of my year. I studied all my chapters like this, all my subjects like this, and I kept time for each and every subject. One last thing before I go and I end this video is that you guys need to stay motivated throughout the year. And this could be saying it's very easy to say that stay motivated but पढ़ते रहो पूरे time like your parents say and like इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा stress होता है. But you guys need to calm, like you need to have your moments where you calm down and you realize that you're working for something that will potentially give you happiness and success later. Because जब मेरे results आए थे, it truly gave me happiness. I was crying that day. I was like, oh my god, all my hard work paid off. So think of this, think of you're working and you're doing all these good things and you're studying hard just to not just get good marks, but also to get happiness when you see your results, also to gain the knowledge from your books and also to use them in your real life. Like all the things you learn are super also important for 11th and 12th. They're the base. So आप ये मत सोचो आप waste करो, you just want to get your marks, but take it as a learning experience. And I would suggest that if you find interest in some subject, you should
spend more time in it, or whenever you're getting bored. Like मैं जब भी बोर होती थी, I used to go to my science. Like I used to study that subject because I knew I would find interest again in the other things I was studying. I used to do maths and I used to get bored and frustrated that I don't get anything. But फिर मैं उससे break लेती थी. I was like नहीं, मैं अब थोड़ा सा break ले लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैथ्स में, तो मैं अपने दूसरी बुक्स को देखती हूँ जो मुझे दो सब्जेक्ट्स विच आई एक्चुअली फाउंड इंटरेस्टिंग. इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी SST, इट कुड बी मैथ्स, इट कुड बी एनीथिंग. आप लोग सोच ही रहोगे मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, बट या. एंड सो दिस वॉज बेसिकली माई फेयर टू सक्सेस गाइड ऑफ बोर्ड्स, एंड यू विल, let me tell you, you guys will be truly happy at the end of your day. Hopefully you really like this video. If you found helpful, please like this video और comment करके मुझे बताना अगर आपको ऐसी कोई वीडियो देखनी है जिसमें मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे अपने नोट्स बनाती थी, maybe like notes organizational hack or video or something, then please comment down below and tell me what you guys want, and I'll see you in my next video. Bye.